case. So in this case what is there, हमारा ग्राफ कुछ ऐसे होगा, if you plot potential energy versus x, so the graph will be something like this. Okay, so at this particular point जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होगा, ठीक है. So at this particular point the potential energy will be minimum. आप देखेंगे स्लोप ये पॉइंट पे, टेंजेंट का स्लोप देखेंगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल. So we can say that at x equals to x1 the slope of this graph, that means जो फोर्स है हमारा dy by dx, this will equal to 0 at x equal to x1. So यहाँ पे हमारा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है एंड यहाँ पे हमारा स्लोप 0. So this is also a position where equilibrium is there. Okay. Now if we try to analyze at a point little bit towards the right, so the x equal to x1 plus है. So at this particular point if you see, ये पॉइंट पे जो हमारा स्लोप है वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है. जो ग्राफ का स्लोप है ऐसे कुछ होगा, टेंजेंट का स्लोप. एंड इफ यू सी ये एंगल जो है हमारा दिस इज लेस देन 90 डिग्रीज. ओके. सो इफ यू सी एट x इक्वल्स टू x1 प्लस, वी कैन से दैट जो हमारा फोर्स है F इक्वल्स टू माइनस dy by dx into I cap. So here the slope is positive, that means dy by dx is positive. So minus dy by dx is negative, जो फोर्स है हमारा. So ये जो टोटल फोर्स है नेगेटिव होगा. That means this force will act towards the left. ऐसे हमारा फोर्स एक्ट करेगा. Okay. And similarly if you analyze at a point towards the left, यहाँ पे एनालाइज करेंगे आप. So x equals to x1 माइनस है. So इस पॉइंट पे जो स्लोप है हमारा कुछ ऐसे होगा, ठीक है. So angle with the x-axis, here the angle will be positive, greater than 90 degree. So if you see at x equals to x1 minus, यहाँ पे जो फोर्स है हमारा दिस इज माइनस dy by dx into I cap. So यहाँ पे स्लोप नेगेटिव होगा बिकॉज थीटा इज ऑब्ट्यूस. सो माइनस dy by dx विल बी पॉजिटिव. तो जो हमारा फोर्स है उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट होगा ऐसे. ओके. So in both the cases, if you are displacing the block or the object from this position to any other position, so क्या हो रहा है अगर आप ब्लॉक को यहाँ पे छोड़ देंगे, बॉडी को यहाँ छोड़ देंगे, so this body will experience a force towards the equilibrium position. तो बॉडी अपने आप यहाँ पे अगर छोड़ दे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. Similarly if you displace it towards the left, so due to the force again the body will come towards the equilibrium position. ऐसा होगा. So that is why basically कोई भी पॉइंट पे आप जाएंगे इक्विलिब्रियम को छोड़ के, so this point is at a higher potential energy compared to the equilibrium point. तो naturally वो higher potential energy से इक्विलिब्रियम पे आना चाहेगा, right. So basically इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे बोल सकते हैं that at x equals to x1 the body is in stable equilibrium. स्टेबल मतलब अगर आप बॉडी को डिस्प्लेस भी कर रहे हैं, सो इट इज अगेन ट्राइंग टू कम बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऐसा बोल सकते हैं हम. सो बेसिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, हमारा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का केस में होगा. सो व्हेनेवर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, दैट इज द केस इन विच इक्विलिब्रियम इज स्टेबल.